Okay, so this is a part of atomic physics. So in laser, first I'll discuss about characteristics of laser. Okay, then I'll go to phenomena involved in light matter interaction. Okay, then we'll go to third, we'll go to Einstein coefficient. Einstein coefficient. Then we'll go to optical resonator. Okay, then we'll go to details about ruby and helium neon laser. Okay, then finally, So the last, yes, the second point, the last point, the interaction. light matter interaction. Okay, then finally we'll discuss about that rate equation. Okay, so this is all about your laser syllabus. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली एक्स्ट्रा थिंग आपको जरूरत होगा, वो है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड एंड प्लैंक्स लॉ. ओके, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो हमारा जरूरत है. बाकी चीज सारी चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. वो दो चीज हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, हम बता देंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट चला इरेज. No, sir. यस. Yes, sir. So you see, what is laser stands for? So it's acronym. So laser means light amplification. So L for light, A for amplification. By stimulated emission of radiation. Okay, this is the full form of laser, light amplification by stimulated emission of radiation. So you see that the term stimulated emission, it is playing that important role to produce high intensity EM radiation. So this is the main phenomena. I'll discuss all phenomena, but main phenomena, that is stimulated emission, that play an important role to produce high intensity
monochromatic EM radiation. Okay. So you can note also that stimulated emission play a significant role to produce high intensity and monochromatic light. And laser is nothing but high intensity monochromatic radiation. So laser is nothing but high intensity and monochromatic radiation. Okay. So this is the specialty of laser. It has very high intensity and it is almost monochromatic. Okay. Now I'll discuss that characteristics. So that light produced by laser has some remarkable characteristics. Okay. So shall I erase? Sir, 1 minute, sir. Yes. sir, due to internet issue, I can't join before. Will you please revise in 2 minutes? Just Yes. So cover you you. see, laser means its full form is light amplification by stimulated emission of radiation. So you see that term, stimulated emission, that is actually playing a significant role to produce high intensity monochromatic radiation. So laser is nothing but high intensity monochromatic radiation. So how it is producing? By this phenomena, stimulated emission. So I'll discuss that stimulated emission. Okay. So that is actually playing that significant role to produce this laser light. Okay. Now, did you understand? Okay, sir. Shall I erase? Yes, sir. Yes. Okay. Those who are from Tamil Nadu and Kerala, if people are getting, if you have any problem, you can ask me. Okay. Are you people enjoying? Yes, sir. If you have any doubt, you can ask me. Okay. Okay, sir. Okay. Now that light produced by laser has some remarkable characteristics. So we'll discuss one by one. Sir, you already explained in English. You can also explain Hindi, please. Sure. So जो लेजर लेजर से जो लाइट इमिट होता है उसका सम रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ओके. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर लाइट. फर्स्ट, डायरेक्शनलिटी. Okay. So laser light is highly directional. The light emitted by laser is
highly directional. So highly directional means what? Highly directional means it has low divergence, है ना? अभी डिस्कस करेंगे. It Okay, means sir. it has low divergence, or you can write very low divergence. अभी बताएंगे हमको. Very low मतलब सर divergence. डेविएट नहीं होता है ज्यादा. हाँ, डेविएट नहीं होता ना ज्यादा. स्प्रेडिंग नहीं होता है. स्प्रेडिंग अभी मैं बस ये करूंगा उसका. कैन यू गिव मी 1 minute प्लीज? आई विल कम. Okay, so it means it has very low divergence. What does it mean? Suppose you have some ordinary torch. This side you have some ordinary torch. ये आपका ऑर्डिनरी टॉर्च है, ठीक है. और एक आपका लेजर डिवाइस है. ठीक है. यहाँ से लाइट इमिट हो रहा है एक ऑर्डिनरी टॉर्च से. ठीक है. तो इसका स्प्रेडिंग काफी ज्यादा होगा. ठीक है. सो इफ यू सी लाइट प्रोड्यूस, अगर यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है सोर्स, यहाँ से अगर 2 किलोमीटर, if you see that laser light intensity or is spreading away from 2 किलोमीटर of the source, तो अगर 2 किलोमीटर फॉरवर्ड में देखोगे तो इसका स्प्रेडिंग कितना हो जाएगा? ये भी आपका ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हो जाएगा. ठीक है. मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली इसका इंटेंसिटी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा एट वेरी फास्ट रेट. Did you get? So this is your ordinary torch. So it is emitting light. So from the from the source at a distance of 2 kilometer, the spreading will be almost 2 kilometer. But same thing if you see from laser, light emitted by laser, if you see that it's spreading from that source, it is very, very less. So if you see at 2 kilometer, spreading will be less than 2 centimeter only. It means they are highly directional. Did you get what I'm saying? Did you people get what I'm saying? Or any doubt? किसी को समझ में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्शनलिटी का मतलब क्या है? इसका स्प्रेडिंग नहीं होगा. देखो, और 2 किलोमीटर दूरी पे देख रहे हो, 2 किलोमीटर दूरी पे इसका कितना हो रहा है? ओनली लेस देन 2 सेंटीमीटर. बट ऑर्डिनरी टॉर्च से अगर जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 2 किलोमीटर दूर पे देखोगे तो इसका स्प्रेडिंग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर. इसका मतलब क्या है? यहाँ जैसे जैसे आप सोर्स से, इफ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, इंटेंसिटी विल बी रैपिडली डिक्रीजिंग. बट if you see from laser, so it has very less divergence, or you can say it has very less spreading. So that intensity will be almost constant, or it will decrease at very, very low rate.
Okay, so that's why due to this directional property, shall I erase this photo figure? Yes, sir. Yes, sir. So सर due 2 to किलोमीटर दूर से देखते कैसे हैं डाइवर्जेंस? 2 किलोमीटर में कोई एग्जाम्पल दिया। इंस्ट्रूमेंट? अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट क्या, इंस्ट्रूमेंट? स्पॉट से आप देख सकते हो ना, एक टॉर्च का है, टॉर्च से जब लाइट निकलता है ना, जैसे जैसे दूर दूर पे स्पॉट पड़ेगा कितना उसका ये होता है ना, स्पॉट का एरिया देखो, है ना। ओके सर, यस ओके यस, सर। वेरी सिंपल। So due to this property, laser can be used as a pointer. So due to this highly directional, laser can be used as a pointer. ठीक है, समझ में आया? पॉइंटर किसको बोलते जानते हो आप लोग? इवन सपोज यू हैव अर्थ, ठीक है, और मून आपका है, ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है। अगर अर्थ से लेजर लाइट को, इनका डिस्टेंस काफी है, यहाँ से अगर लेजर लाइट को आप सेंड करोगे, ऑल्दो इट्स डिस्टेंस इज सो लार्ज, बट यहाँ पे अगर लेजर लाइट अर्थ से मून पे सेंड करोगे तो आपको जो स्पॉट मिलेगा वो भी ओनली फ्यू सेंटीमीटर। ओके, सर इतना जाएगा वो, मतलब? yes, it can go. If you have very high intensity na, it can go. From Earth, if we send it, we can see that on a moon. You can measure distance also. If you send it na, it will go there, then it will again reflect back. Okay, so these things I think we have learned in 12th class also, how we'll measure the distance. Excuse me, sir. Yes. Sir, parallax So method. can you repeat this? So yeah, suppose you have Earth and you have Moon. Okay, so if you send that laser light from Earth, although the distance is very large, so if you send that light, so we expect if the distance is large, then obviously that spot size will be large. But this is the specialty of a laser. It has very low divergence. So if you send that light, you will get spot. That size of spot is so small. It is only few centimeter. ठीक है, दैट्स व्हाई इट कैन रीच बिकॉज इट हैज लेस डाइवर्जेंस। तो इसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है, उतना रैपिडली डिक्रीज नहीं हो रहा है। बट अगर आपका ऑर्डिनरी लाइट होता तो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उसका क्या होता है, स्पॉट साइज बढ़ता जाता है। तो स्पॉट साइज बढ़ने का मतलब क्या है, उसका इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे रैपिडली डिक्रीज नहीं होगा। सो इट कैन रीच इट कैन गो वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, इज इट क्लियर? सर मून के बाद जो पास तो फ्यू सेंटीमीटर में ही क्यों गया, मतलब ये प्रॉपर्टी या फिर कुछ कारण है? हाँ, फ्यू सेंटीमीटर इसीलिए है ना, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस कम है। ये देखो, डाइवर्जेंस अगर बढ़ता जाएगा, अगर डाइवर्जेंस ज्यादा होता, क्या होता है आपका, डाइवर्जेंस अगर ज्यादा होता तो फिर क्या होता है, आपका जितना नंबर ऑफ फोटोन है वो क्या है, एरिया में डिवाइड हो रहा है ना। तो जैसे जैसे आपका स्पॉट साइज बढ़ता रहा है तो इंटेंसिटी तो वही है, बट वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो इसीलिए आपका इंटेंसिटी क्या है, अगर डाइवर्जेंस ज्यादा है तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ क्या होता है, घटता जाएगा, है ना। तो इंटेंसिटी एक डिस्टेंस पे आके जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो लाइट और फर्दर नहीं जा पाएगा, है ना। बट लेजर में क्या है, डाइवर्जेंस कम है तो इंटेंसिटी आपका घट नहीं रहा है। तो इंटेंसिटी घट नहीं रहा है मतलब क्या है, इट कैन गो वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर ऑर्डिनरी लाइट होता तो डाइवर्जेंस हाई होने के कारण कुछ डिस्टेंस ही जा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसका एरिया स्पॉट साइज ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट गोइंग टू जीरो आफ्टर दैट। ठीक सर मैं मून के बाद पूछ रहा हूँ सर, मून के बाद जो फ्यू सेंटीमीटर गया है वो क्यों गया है, वो मतलब वो... मून के बाद नहीं, मून पे देख रहा हूँ, आज से सेंड किया और मून पे जाके जो मिल रहा है वो स्पॉट साइज फ्यू सेंटीमीटर होगा, मून के बाद नहीं। मतलब आज से मैं सेंड कर रहा हूँ मून पे, समझ में आया कि नहीं, मून के बाद नहीं।
Did you get or Yes, any other question? okay sir. No, if you have डाइवर्जेंस हाँ? डाइवर्जेंस लो क्यों होती है मतलब बेसिकली? that is that term because stimulated emission that I'll discuss na. After a few minutes I'll discuss. That's the special characteristics that is because of stimulated emission. Okay. Now can we go for next property? Next is B, high intensity. Okay, so there are two kind of laser. One is continuous wave laser. CW means continuous wave laser. If you see its intensity, for continuous wave laser, its intensity is 10 की power 5 watt per